हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकअप नॉलेज। कुकअप नॉलेज आपके सामने लाया है एस जेवनल जे मैकेनिकल सॉल्ट पेपर पार्ट 2। यह 2018-19 में क्वेश्चंस आए थे। पार्ट 3 जनरल अवेयरनेस ऑफ मैकेनिकल सेक्शन जल्द ही आपके सामने आएगा, सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। 34. The COP of a refrigeration cycle with lowering of condenser temperature keeping the evaporator temperature constant will A. Increase, B. Decrease, C. Remain unaffected, D. Unpredictable। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। 35. The most suitable refrigerant for a commercial ice plant is A. Brine, B. NH3, C. Freon, D. Air। इसका सही जवाब है NH3, अमोनिया। 36. On psychometric chart, dew point temperature lines are A. Horizontal, B. Vertical, C. Curved, D. None of the above। दोस्तों, इसका आंसर की के हिसाब से ऑप्शन डी दिया गया है, नन ऑफ द एबव, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल। 37. Dimension of surface tension are A. M1 L0 T minus 2, B. M1 L0 T minus 1, C. M1 L1 T minus 2, D. M1 L2 T minus 2। आपको पता होगा दोस्तों, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट इज मास इनटू LT minus 2। So final formula will be ML0 T minus 2. So option A will be the correct answer. 38. The stress strain relation of a Newtonian fluid is A. Linear, B. Parabolic, C. Hyperbolic, D. None of the above। इसका सही जवाब है A. Linear। 39. A pressure of 25 meter of head water is equal to A. 25 kilonewton per meter square, B. 245 kilonewton per meter square, C. 2500 kilonewton per meter square, D. 2.5 kilonewton per meter square। आपको पता होगा कि प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। सो कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन बी 245 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। 40. The point in the immersed body through which the resultant pressure of liquid may be taken to act as A. Metacenter, B. Center of pressure, C. Center of buoyancy, D. Center of gravity। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंटर ऑफ प्रेशर, where resultant pressure of the liquid acts। बर्नौलीज थ्योरम का प्रयोग किस यंत्र के फ्लो के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? ए. वेंटोमीटर, बी. ऑफिस प्लेट, सी. नोजल, डी. पिटोट ट्यूब। इसका सही जवाब है ए. वेंटोमीटर। 42. Cavitation is caused by A. High velocity, B. High pressure, C. Low viscosity, D. Low pressure। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लो प्रेशर। 43. Head loss in a flowing fluid is experienced due to A. Friction at surface, B. Change of direction, C. Change of section of passage, C. D. All of the above। इसका सही जवाब है all of the above। 44. The impact strength of a material is an index of its A. Toughness, B. Tensile strength, C. Hardness, D. Fatigue strength। आप कब देख सकते हैं तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टफनेस। 45. Which of the following material is most elastic? A. Rubber, B. Plastic, C. Brass, D. Steel। इसका सही जवाब है डी, स्टील, because it has modulus of elasticity of steel is greater than other three option। So D is right answer।
46. The percentage reduction in area in case of cast iron when it is subjected to tensile test is of the order of A 10%, B 0%, C 20%, D 25%. जैसा आपको पता है कि कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, सो टेंसाइल टेस्ट इसकी 0% रहेगी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 47. The moment diagram for a cantilever beam subjected to bending moment at end of the beam will be A. rectangle, B. triangle, C. parabola, D. elliptical. इसका सही जवाब है A. rectangle. 48. Strength of a beam is proportional to the square of its A. length, B. depth, C. width, D. moment of inertia. इसका सही जवाब है B. depth. 49. In a continuous curve of bending moment, the point of zero bending moment where it changes sign is called the point of reflection, the point of contraflexion, C. the point of a virtual hinge, D. all of the above. इसका सही जवाब है all of the above. 50. In order to determine whether a column is long or short, one should know A. length, B. cross section, D. moment of inertia, D. slenderness ratio. इसका सही जवाब है डी स्लेंडरनेस रेशो. 51. For application involving high stresses in one direction only, the following type of thread would be best suited: A. metric thread, B. Acme thread, C. square thread, D. buttress thread. डायग्राम में देख सकते हैं आप, डी इज राइट आंसर, बटरेस थ्रेड. 52. For a riveted joint design, diameter of rivet D in terms of plate thickness T is equal to ऑप्शन A, B, C, D आप देख सकते हैं. इसका सही जवाब है B. D इक्वल टू 6.05 अंडर रूट ऑफ T. 53. A riveted joint may fail due to A. shearing of the rivet, B. crushing of the rivet, C. both A and B, D. none of the above. रिविट जॉइंट दोनों तरीकों से फेल हो सकता है, शेयरिंग और क्रशिंग की वजह से, सो सी बोथ ए एंड बी. 54. In a welded joint, the throat of weld as compared to size of weld is A. about same, B. about 0.7 times, C. about 1.25 times, D. about 0.25 times. इसका सही जवाब है B. about 0.7 times. 55. Shape of woodruff key is like A. cylinder, B. semicircle, D. sphere, D. trapezoid. इसका सही जवाब है B. semicircle. 56. Stub tooth in gear is A. standard tooth, B. longer than standard tooth, C. shorter than standard tooth, D. of a special profile. इसका सही जवाब है C. shorter than standard tooth. 57. Cast iron is characterized by minimum flowing percentage of carbon A 0.2%, B 2%, C 4.3%, D 2.2%. इसका सही जवाब है B 2%. 58. Railway rails are normally made of A. mild steel, B. alloy steel, C. high carbon, D. cast iron. इसका सही जवाब है C. high carbon steel. 59. The temperature and carbon content at which eutectic reaction occurs in iron-carbon diagram equilibriums are A. 723 degrees Celsius and 0.02%, 723 degrees Celsius and 0.80%, C. 910 degrees Celsius and 4.3%, 1130 degrees Celsius and 4.3%. इसका सही जवाब है ऑप्शन C. 910 degrees Celsius and 4.3%. 60. Which of the following has maximum hardness? A. austenite, B. perlite, C. sorbite, D. martensite. इसका सही जवाब है D. martensite. 61. The roller of a cycle chain are subjected to following type of stress: A. compressive, B. tensile, C. bending, C. fatigue. इसका सही जवाब है D. fatigue stress. 62.
Toughness of a material means A. Strength, B. machinability, C. Stress relieving, D. Softening. इसका सही जवाब है A. Strength. 63. Weld spalter is a flux, B. electrode coating, C. welding defect, D. none of the above. इसका सही जवाब है C. welding defect है ये. 64. Swedging is an operation of a hot rolling, B. forging, C. extrusion, D. piecing. इसका सही जवाब है B. It is a forging operation. 65. Long wires are made by following process: A. coining, B. welding, C. stretching, D. drawing. इसका सही जवाब है D. drawing. 66. Which of the following operation is different from the rest? A. riveting, B. embossing, C. punching, D. coining. इसका सही जवाब है C. punching is different operation from the rest. 67. Trimming is the process associated with A. presswork, B. electroplating, C. polishing of metals, D. machining. इसका सही जवाब है A. Trimming is the process associated with presswork. 68. Lathe bed is usually made of A. structural steel, B. stainless steel, C. cast iron, D. mild steel. इसका सही जवाब है C. cast iron. 69. No lubricant is required when cutting thread in A. tungsten carbide, B. mild steel, C. cast iron, D. high speed steel. इसका सही जवाब है C. cast iron. 70. The following gauge is used for checking of holes: A. ring gauge, B. snap gauge, C. dial gauge, D. plug gauge. इसका सही जवाब है D. plug gauge. दोस्तों ये थे टेक्निकल के 70 क्वेश्चन जो कि मैकेनिकल 2018-2019 एस जनरल एग्ज़ाम में पूछे गए थे. इसका जनरल अवेयरनेस पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा. सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग कुकअप नॉलेज. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.